But as you will all agree, that culture in many ways reflects the best aspects of society. And that's what you've seen just now. When you heard the music, you from the first intervention till the last, what did we get out of it? And this was, they are reflecting what was the essence of the culture that emerged out of Indian nationalism. What was the first thing that was said? That Indian nationalism was not equated to the state. सरकार या स्टेट नेशनलिज्म नहीं होती है, पीपल नेशनलिज्म होते हैं. यहाँ एक जो इस नगर पालिका वाली बात हो रही है, वो नगर पालिका से लेके सरकार, नेशनल गवर्नमेंट तक वही समझते हैं कि वही नेशन है. अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोल देंगे तो आप देशद्रोही हुए. आप तो जानते हैं जेएनयू में हम सारे इसीलिए देशद्रोही माने जाते हैं, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हमारी नेशनलिज्म में कोई भी जुर्म हो उसके खिलाफ बोलना होता है. और ये जो आपने गाने सुने, उसमें सारों में आपने क्या देखा? हर एक में देयर इज प्रोटेस्ट इन्वॉल्व, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे हंगर हो, चाहे फॉरेन रूल हो, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट. ए nationalism was to be connected to the people. It's the people's nationalism. This is our nationalism, was always connected to our people. As somebody has recently written on this, that our nationalism, as Gandhiji saw it, was our nationalism was wiping the last tear from the eyes of the poor. So it was not only the people, but it was the oppressed, it was the weakest. That was our nationalism. But the nationalism that is being forced down our throat comes from a completely different tradition. And it's amazing that those people who are now saying that they are the representatives of nationalism, that they are bringing back indigenous nationalism, they are against all of us, Macaulay Putras and English-speaking people. They are actually borrowing a completely different nationalism, which is the nationalism that emerged in Europe. Since ये सारी राष्ट्रवाद की बात हो रही है, मैं 2-4 मिनट सिर्फ इस पे आपके साथ बात करना चाहूंगा कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नेशनलिज्म हर जगह में एक चीज नहीं होती है. यूरोप में जो नेशनलिज्म पैदा हुआ था, that was, as you all know, that emerged out of the rise of capitalism and imperialism. एक एक यूरोपियन नेशन स्टेट्स बनते हैं और साथ ही में वो एम्पायर बनाते हैं, और उनकी जो सारी नेशनल प्राइड होती है वो उससे जुड़ी होती है कि हमारी एम्पायर कितनी बड़ी है. Whether the sun ever sets or does not set in their empire.